Hello everyone, welcome to Botaniverse. Previous video रे आमे cell wall composition and nutrition of fungi विषय रे जानिथिले. आज आमे जानिबा reproduction of fungi विषय रे. तो चलंतु ए विषय रे पढिबा. Reproduction in fungi occurs by vegetative methods, asexual methods and sexual manner. तो fungi रो reproduction मुख्यतः तीन प्रकार होइथाय. गोटे vegetative reproduction, asexual and sexual method. प्रथमे आमे जानिबा vegetative method of reproduction विषय रे. Vegetative reproduction occur in different ways in different species. Vegetative reproduction ने fungal body रो किछि अंशरु नुआ mycelium बा नुआ fungus सृष्टि हेताय. से विषय रे आमे जानिबा. तो प्रथमे आमे जानिबा fragmentation विषय रे. It is the most common method. The hyphae break up into small fragments accidentally or otherwise, and each fragment develops into a new individual. In some fungi, the fragments consist of a special modified cell or cell called Chlamydospore and oidea. Fragmentation में कौन हुए ना fungal hyphae गुड़ा को कौन छोटो छोटो fragment रे भांगी जाए. आउ each fragment रु गोटे नुआ individual बा नुआ mycelium सृष्टि हुए. ताकू आमे फ्रैगमेंटेशन कहबा. एठी आपण डायग्राम रे देखि परथबे ए हाइफीटा कोन हिची ना स्मॉल फ्रैगमेंट रे डिवाइड हे गेची आ ईच फ्रैगमेंट रु गोटे नुआ माइसिलियम डेवलप होबो. नेक्स्ट हमर आसीबो क्लामाइडोस्पोर. These are unicellular fragments which are formed either in single or in chain in the vegetative hyphae, and each chlamydospore gives rise to new mycelium. Chlamydospore होची thick walled unicellular spore. एटा सिंगल चेन आकार vegetative hyphae रे गठित हुए. आउ फेवरेबल कंडीशन ने एटा जर्मिनेट हेकी गोटे न्यू mycelium टा फॉर्मेशन करे. एठी डायग्राम रे आपण माने देखि परथुवे एटा होची chlamydospore. एथरु जर्मिनेट हेकी गोटे नुवा mycelium फॉर्मेशन होए. तापर आमे जानबा oidea विषय रे. Oidea are rounded structure. Each oidium gives rise to the new mycelium. तो oidea होची rounded in structure and each oidium grow to form a new mycelium. Fission. Unicellular fungi like Fission yeast generally reproduce by fission. In this process, first the parent vegetative cell elongate and divide into the two equal daughter cell. Each daughter cell grow into new normal cell. तो यही प्रकार रिप्रोडक्शन साधारणतः यूनिसेलुलर फंजाई जेमति कि ईस्ट रे देखा जाए. एठी डायग्राम रे आपण माने देख परथबे एटा होची गोटे पेरेंट सेल. ए पेरेंट सेल टा elongate हेकी माने डिवाइड हुए दीटा इक्वल डॉटर सेल ले आउ ईच डॉटर सेल ग्रो इनटू एज न्यू mycelium. Then budding. Reproduction by budding is normally seen in Saccharomyces species. Budding रे कोन हुए ना parent cell रो surface ऊपर गोटे छोटो बड बाहरे. ए बड टा आस्ते आस्ते ग्रो करे माने बड़ हुए. जेतबळे एटा मैच्योर हे जाए एटा parent cell लु अलगा हे जाए. एवडा साधारणतः हमरो ईस्ट रे देखा जाए. एठी आपण डायग्राम रे देखि परथु एटा होची गोटे पेरेंट सेल. एथरो गोटे बड बाहरला तापर एटा आस्ते आस्ते ग्रो करिकि पेरेंट सेल लु अलगा हे गला आ ए बड रु गोटे नुवा माइसिलियम ग्रो करिवो. तापर हम आसीबा राइजोमॉर्फ. राइजोमॉर्फ आर स्पेशली मॉडिफाइड माइसिलिया. Under return of favorable condition, the rhizomorph resumes growth at its tip and give rise to new mycelia. Rhizomorph होची रूट लाइक मॉडिफाइड माइसिलिया जोटा कि फंजाई को सर्वाइवल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ने हेल्प करे. स्क्लेरोसिया. Sclerosium is a hard compact restoring body consisting of dense mass of thick walled hyphae. It serves both as perennating and reproductive structure. With return of favorable condition they germinate. Sclerosia होची hard and compact resting body. एटा माने थिक वॉल्ड हाइफी रे तयारी हिथाय. एडवर्स कंडीशन ने एटा फंगस को बंचै की रखे. जेतबळे फेवरेबल कंडीशन आसे ए माने जर्मिनेट करंदी आ नुवा माइसिलियम गठन करिबारे हेल्प करंदी. Here is your diagram of sclerosia.
नेक्स्ट आम जाना asexual reproduction विषय रे. The fungi in which only asexual method of multiplication is seen are called as anamorphs, while the sexual form are called as telomorphs. The complete form having both the reproductive forms are called as holomorph. तो जो फंजाई माने केवल asexual मेथड रे मल्टीप्लिकेशन करते आम तांको anamorphs कहबा. जो माने सेक्सुअल मेथड रे रिप्रोडक्शन करते ताको आम टेलोमॉर्फ कहबा. जो माने बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड रे मल्टीप्लिकेशन करते आम से होलोमॉर्फ बोली कहबा. However, asexual reproduction is found in all fungi in which they produce spore in very large quantities which disseminate to colonize new area. Asexual spore are various types and borne upon special structure called sporophores. Asexual reproduction ने fungi large amount रो spore produce करे. With the help of air, water, ये spore गुड़ा कौन होती ना spread हो जाती विभिन्न एरिया को आउ कॉलोनी गठन करिबारे साहाय्य करती. सेक्सुअल स्पोरटा गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर ऊपर बर्न करे जहाँ को आम स्पोरोफोर्स बोली कहबा. The fungus producing more than one type of spore is called as plemomorphic or polymorphic. When the spore are produced inside the sporophore, they are termed by endogenous spore, and when produced outside the sporophores, they are termed as exogenous spore. जितेबाला स्पोरटा स्पोरोफोर भितर देखा जाए ताको आम एंडोजिनस स्पोर कहबा. जितेबाला स्पोरोफोर बाहर सेटा देखा जाए ताको आम एक्सोजिनस स्पोर कहबा. एबे आम जानिबा एंडोजिनस स्पोर विषय रे. दे आर प्रोड्यूस विदिन द स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरांजियम. Sporangia are born on the sporophore called as sporangiophore, which may be branched or unbranched. स्पोरांजियम होची गोटे स्पेशल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. एंडोजिनस स्पोर रे स्पोरांजियम भितर स्पोर उत्पन्न हुए. स्पोरांजियम टा गोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऊपर ग्रो करे जोटा को आम स्पोरांजियोफोर बोली कहबा. द एंडोस्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरांजिया मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. द मोटाइल स्पोर आर कॉल्ड एज जूस्पोर and non-motile are called aplanospore. The sporangium producing zoospore is called by zoosporangium. तो ये एंडोस्पोरटा मोटाइल है थाई पारे किंबा नॉन मोटाइल है थाई पारे. मोटाइल मीन्स जो माने मूव करि परिबे. नॉन मोटाइल माने मूव करि परिबे नाही. तो जोगुडा मूव करि पारंती ताको आमे जूस्पोर कहबा. जोगुडा मूव करि पारंती नि ताको आमे नॉन मोटाइल बोली कहबा बा ताको आमे कहबा aplanospore. जूस्पोर प्रोड्यूस करुथबा स्पोरांजियम को आमे जूस्पोरांजियम बोली कहबा. Endogenously produced zoospore are either uniflagellated or biflagellated. Each spore lacks a cell wall and is vacuolate. The zoospore are generally kidney shaped or reniform and flagella are inserted posteriorly or laterally. तो जूस्पोर रो फ्लैजेला थाए. एटा यूनिफ्लैजेलेटेड है थाई पारे किंबा बाइफ्लैजेलेटेड है थाई पारे जोटा कि मूवमेंट करिबारे हेल्प करे. आ एटा किडनी शेप रो थाए. They have no vacuole and possess two large cell walls. The outer thick layer is called epispore or exospore and ornamental. The inner thin layer is called endospore. तो इस स्पोर दीटा लेयर थाए. आउटर लेयर टा थिक थाए ताको हम एपिस्पोर बा एक्सोस्पोर कहबा. आउ इनर लेयर टा थिन थाए जोटा को एंडोस्पोर बोली कहबा. एबे हमें जानिबा एक्सोजिनस स्पोर विषय रे. Spore produced externally are called exogenous spore. Conidia are the only exogenous spore. These spores are borne on vertically growing branched or unbranched hyphae called conidiophore. It may be septate or aseptate. Exogenous spore रे स्पोर टा स्पोरोफोर रो बाहरे फॉर्मेशन हुए. सबुठु इम्पोर्टेंट एक्सोजेनस स्पोर होची कोनिडिया. कोनिडिया जो हाइफी ऊपर उत्पन्न हुए ताको आमे कोनिडियोफोर बोली कहबा. द कोनिडियल चेन मे बी इन basipetal succession when the older conidium remains at the tip of the chain. Conidia are borne on the short branch of the conidiophore called sterigmata. कोनिडिया चेन आकार देखा जाए. आ ओल्डर कोनिडिया गुड़ा माने माइसिलियम रो टिप ऊपर देखा जाए.
आ कोनिडिया गुड़ा गोटे सर्ट ब्रांच कोनिडियोफोर ऊपर देखाती जोटा को आम स्टेरिगमाटा बोली कहवा। एठी डायग्राम रे आपण मैंने देखिपे यहाँ हूँ गोटे कोनिडियोफोर, एगुड़ा हूँ गोटे गोटे कोनिडियम, एगुड़ा जो देखा जाए माने जहाँ पर देखा जाए ताकू स्टेरिगमाटा बोली कहवा। In other type of hexospore, the sporophores develop in groups and form the specialized structure called the pustules, Pycnia, Acidia, Acaroli, and Sporodokia. Conidia are diverse in shape and size. They may be unicellular or multicellular, uninucleate or multinucleate. तो Conidia टा shape आउ तारा size vary करे. एटा may be unicellular है पारे किंबा multicellular है पारे, uninucleate किंबा multinucleate है थाई पारे. Dispersal of spore in fungi. Fungi are found almost everywhere in the world because of their spore, which are produced in large number and have evolved interesting mechanism of dispersal. Fungi माने large number spore produce करंती आउ various method रे माने spread होंती. तो आम से विषय जानिबा. फर्स्ट आम जानिबा airborne spores. Airborne spores in fungi are tiny reproductive units released into the air to spread and help fungi reproduce. They are often produced by mold like aspergillus mushrooms and can travel long distance. These spores can affect health by causing allergies and infections. ये स्पोर माने कौन करती ना एयर द्वारा गोटे जगह आ गोटे जगह को स्प्रेड हो जाती. तार एग्जांपल होची मशरूम्स, मोल्ड लाइक एस्परजिलस एगुड़ा हूँ तार एग्जांपल. आ एटा हेल्थ इशू देखाए जमती कि एलर्जी इन्फेक्शन. वाटर डिस्पर्स्ड स्पोर्स. Water dispersed spores in fungi are reproductive units spread by rain, water splashes, or flowing water. These spores often have slimy coating or structure that help them move with water. Examples include Allomyces and some aquatic fungi. तो किछि स्पोर पानी रेन स्प्लैश वा फ्लोइंग वाटर द्वारा स्प्रेड होती. एग्जांपल होची हमरो Allomyces. Dispersal of spore by insect. In some fungi, spores are dispersed by insect through a process called entomochory. Insects are attracted to the fungus by odor, color, or nectar-like substances, and as they visit, spores stick to their bodies and are carried to new location, aiding in fungal reproduction. Example होची हमरो skin on fungi attract flies that carry away sticky spores. किछि फंजाई रो स्पोर इंसेक्ट द्वारा स्प्रेड होंदी. इंसेक्ट फंगस रो स्मेल बा कलर द्वारा अट्रैक्ट होंदी. स्पोर इंसेक्ट रो बॉडी रे लागि जाई अन्य स्थान को पहुंची जांदी. एग्जांपल होची हमरो स्टिंग हॉर्न फंजाई. Spore dispersal by animals. Spore dispersal by animals in fungi occurs when animals eat the fruiting bodies like mushrooms and later excrete the spores elsewhere, or when spores stick to their body and are carried to new location. This helps fungi spread to suitable habitats. किछि एनिमल्स मशरूम परी फ्रूटिंग बॉडीज खाती पर स्पोर से बॉडी रु बाहरी अन्य स्थान को स्प्रेड हो जाए. यह फंजाई को नुआ हाबिटाट रे एस्टाब्लिश होबारे सहायता करे. सो दिस इज फॉर टुडे. आज आम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस स्पोर एवं स्पोर डिस्पोजल इन फंजाई विषय जानिले. जदि वीडियोटी भल लगिला तेबे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू एवरीवन.